तो एक्चुअली यस्टरडे हम लोग क्या देखे थे इसमें ये वी हैव सीन फ्रॉम द गिटिया रिपोजिटरी ओके ओके सो see actually yesterday whatever I did in Gitia from Gitia we did okay okay and another one is yesterday if I will open kubectl git namespace. I have created one Gitia namespace, correct? See Gitia namespace. Now I will check. Gitia okay, so this is Gitia, okay, and switch if you will do git switch hyphen o wide. So on this one, it was running. Okay. So again, I will see if you will. If see just now, I have restarted the server. Okay. It means whatever yesterday we did on GTR. Okay. Whatever we did means yesterday we have created the manifest file and those all things. Okay. Those all setup I did on GTR. But those all things will go. Okay. After rebooting the server. Why? Because we haven't given the storages. Okay, means we haven't defined the space. Okay, means PVC. Okay, one concept we will learn PVC. Okay, so that I will teach you. Okay, after because that is little bit storage concept. So that I will explain, and later I will explain you that one PVC. Okay. Persistent volume storage. Okay, that I will explain uh, after some days. So if you will open this one, so that will come to the install page. Okay, see. This one. Okay, this one is our ArgoCD. Okay, so ArgoCD will run fine. Okay, now if you will log in on ArgoCD. This is the application. Now see, there is some error. Okay, some error you will get it here. If you will go in repository, see it's failed. Okay, so now if I will try to open Githia now, okay,
Yeah, okay, I will. See, see, again this came on installation page. Okay, again this came on installation Github. Because yesterday, whatever we installed it, okay, whatever we installed it, that is gone because we haven't defined the volume for this one. Means we haven't defined the storage for this installation. Okay, so that's why it's gone. So for this one, first we need to study about the persistent volume. Okay, that is a part of Kubernetes. Okay, so that I will teach you after some classes. Okay, so meanwhile, today what I will do, I will show you from the GitHub. Okay, so what I did here, see, I will open this one in new. Okay, see, see, this is our log DevOps. Okay, okay, this is not our account. Okay, let me sign in with sign in. Logs DevOps. Mhm. So what I did now, I have created one public. Okay, I have created one public folder. Okay, so this is the ArgoCD folder I have created, okay? And inside this one, okay, if you will click on this one, see there is log DevOps backend, okay? This is the folder, okay? This is the folder, and inside the folder, I have created one applications, whatever I want to deploy it. Okay, so this is the folder. Okay, this is the folder, and here this is the application name. With the application name, I have created it. So, okay, let me, I will create one more, okay, for you guys. So, what I will do, see, what you need to do, first, go to the repository, okay, then click on new, okay, and click the repository name. So, whatever you want to, you can assign the name of your repository. Generally, we are giving the name according to our application name. So, what I will give the application name, Java or regis registration, okay, registration backend. This is our repository name. Then after I, you can keep as a private or public, so I will keep here as a public so you people can access it. Okay, so public, and here you need to add a readme file. Okay, then after you can click on create repository. Okay, so now your repository is created. Okay, so now what you will do here, create create a folder. Okay,
So this is the repository, one folder I will create. Suppose backend application. Okay. Now inside this one, I will keep our deployment file. Deployment dot YAML. So here already available. Basically, I want to show you how we can deploy it from this one. Okay. So see, I already kept this deployment file here. So I will copy it. And you can keep it here. Okay. And see, here namespace is authentication. But here I have created. We need a separate repository for ArgoCD. No, no, see, in this repository we are creating for keeping the manifest file. Okay. Whatever the manifest file you have to keep in one folder. Okay. Yes. See, come here. See, this is ArgoCD. No need to create the name with ArgoCD only. You can create with any name. Okay. You can create with any name. Okay. And inside that one, you have to create your application name. Then after the deployment name. For which Okay. purpose we are creating this repo? Actually, Yesterday, I was yes. yesterday you guys are not attended. Okay, that's why you are getting the problem here. Okay, that's why I am telling every day you have to attend the class. Otherwise, I'm not going to reply the answer whoever asks me who is not joining on daily basis. This thing I already mentioned in the group and over the session, even I explained so many times. Okay, that if person who is not attending the call, I'm not going to give the answer. Okay, because same thing I will repeat. The guys who will attend the daily basis, okay, that will get a problem. Okay, so okay, I'm telling about this Yes, one. So sure. after if you will ask, I will not going to answer it. See, why actually we are going to create the repository? See, for any application deployment, okay, suppose come here. Suppose come to the repository. See, here I have created one applications. So inside this application, all the files. Okay, this is a new one. Okay, come here. See, this is the repository. There I kept these all things, right? According to this one, if you are going to clone, these all will come on your machine, right? On local or over the server. Then after you are able to build this application, right? Similarly, Similarly, I now we are going to deploy the applications. For the deployment of the application, we have created the deployment.yml, customization.yml, and service.yml. Okay, these all three things. Yesterday, I already explained in the better way. Okay, why we have created configuration here. Okay, yesterday I already explained about these all things. Okay, so now for the deployment of application, like if you are going in any organization, there everything will be separate, like service.yml for one application on different file. Suppose this is the application. Okay, this is your application. For which application? Backend application we are going to deploy. Okay, which backend application? Earlier, we have created one log DevOps backend page. This backend page, correct? For that application, we have created the image.
Okay, and now we are going to deploy that application with the help of that image. Okay, for the deployment of application, what we need some YML file in Kubernetes. Okay, that's why we have created these all things. So deployment, I already explained it. Okay, see, from the CLI, I have explained with the help of deployment only, with the help of service, one by one there I should. But in organization, we are not doing like that. Okay, in organization, we have to deploy the application end to end. Okay, means whatever the required for the application, you have to keep at one place. Okay, like here, this is the application dot properties of that application. Okay, that we can keep inside the config. Okay, so now why here configuration? See, ArgoCD, why we install, why we are using ArgoCD? See, ArgoCD is providing a customization deployment. Yesterday, I already explained about the ArgoCD, that why we are using the ArgoCD. So, ArgoCD is the tool, okay, that is deployed on top of our Kubernetes cluster. Okay, there we have API server, scheduler, these all things are there. Okay, so those all things are connected with ArgoCD. So whatever the properties of Kubernetes, those all properties having with ArgoCD. ArgoCD is having some more facility. Okay, some more facility like UI. ArgoCD is giving the UI. Okay, that's why only we are using the ArgoCD. Okay, those all API are connected with the ArgoCD. Whatever the API is available in the Kubernetes, those all API are available in the ArgoCD as well. Okay, similar kind of work there, but UI is available here, and we can do the customization deployment. See, right now we are doing the deployment with the customizations. Okay, but in many companies, deployment are done with the help of help chart. Okay, that also I will explain. Okay, this is our customization deployment. So many industries, many organizations are using the customization deployment and help chart deployment. Two are the better options for the deployment of applications. So the first one is this one, whatever I am explaining here. Okay, so here what I did. See here I have created one folder. Inside that folder, our application name is available. Then after our deployment file. Okay, so see here namespace is authentication. Now if you will see on the server, here you can see the namespace that we have created registration. Okay, so we need to change it. So what I will do now, I will make with namespace registration now. So commit it. So our deployment file is ready now. Now next is customization or service. First I will copy this one. So this one I will give as a customization.yml. Customization.yml. Okay, then after here also the namespace is authentication. So we need to change it with. See, whoever is missing the class, okay, I will, after 1 or 2 months, I will
come on YouTube, okay, on YouTube channel. That is some basic things be like free of course, and some advanced level will be on paid basis, okay. So whoever attending the and see these classes is completely free. Okay, this classes is completely free. But after that, see one person can't give more time to you like this. Okay, no anybody can help you like this. But you guys are attending the class, leaving the class. I don't know why. See, if you want to learn this, you have to go with every class. Oh, now here inside the backend, we will create one more file service.yml. Here also we need to change it. See, now our deployment file is ready, customization is ready, now service.yml is ready. Now one more things, we have to create one configurations. So generally configurations we are keeping over we are keeping in repository only, okay? Because developer always make the changes in the application.properties. Like see, sometimes same application will use the different database as well, okay? That's why we see the application. See, this is the database. Okay, this is the database deployed in the local. Okay, that is available here. See, username is sq log DevOps. Okay, so same I used here. Same I used here. Okay, see. So now this is ready here. Okay. Now yesterday I have deployed the application, this application only with the help of GitHub. Okay, so GitHub is already good because we haven't created the PVC. Okay, so now later on I will explain about the PVC. Then again I will come to the GitHub. Okay, so if you will this one only, right? See, if you will go to the application, this is not healthy. Okay, this is giving error. Okay, this is giving error. Okay, because repository not found. Yesterday I have created the repository on GitHub. So that's why today we will create because see, this is on cloud, so storage is not required. But GitHub is personal. You can create a personal repository. Okay, GitHub is personal repository and this is cloud repository. Okay,
So whenever you are using the personal things, you need your storage. Okay. So yesterday I haven't defined the storage. Okay. That's why that is deleted. So now what I will do, go to the setting and go to the repository, how we are creating it. Click on connect, then click on HTTP. This is Git project. See, this is the project I have created yesterday. Okay, default is by default. Default is coming by default registration project I have created. Whatever the namespace is available, same name you have to give in the project. Okay, name of project and name of namespace both should be same. Yesterday I have explained about the how to create the project. Okay, see if you will see a step to create a project in ArgoCD. How we can create a project. Okay, these things I already explained and I already created. Okay, so this thing you should know. Okay, this thing you should know. Then after, otherwise, if you will not create the project, you can choose the default one. Okay, so in default project that will go. Okay, see here two is showing project default and registration. If you will not create the registration, you can choose the default. So I have already created the registration repository URL. So just now we have created. See this one just now I have created. So select till, or not this one, this one. Select till the tree. Okay, and this will be your repository, and you have to come here. Okay, then repository link, username and password. So he is asking about the username and password. So this repository I have given as a public. Okay, but this one you can use or not. That is not a problem. In GitHub we have created. Okay, in GitHub we have created log DevOps so that we can use. Or otherwise, if you will not give, that is not a problem. See, if this one is private repository, okay, this one is private repository, then you can use it. If this one, if I will not use right now, see, this will connect. See, this one is connected, right? Successfully. So last one is from the GitHub that is already deleted. So that's why it's showing failed. So now you can create the application from this option, or otherwise you have to come to the application option. Okay, application, then new application, then you whatever you want, you can give the application name. So I have given the registration backend, so I will give this one only. And project name registration I have given this one, no required to change, no required to change. Then come to the repository and see this option is showing now. So select this one, and here we have main branch. Okay, why this one is showing as main branch? If you will check here, see, if you will check here,
This is the main branch it's showing. Okay, that's why showing as a main branch. So we will select the main branch and path. Path backend application is showing. Okay, why? See, here I have given registration backend. Okay, that's why it's showing a registration by backend application here. This one. Okay, whatever you given the folder name, that will show. So see backend application. Again, see this cluster I already added yesterday. This one also I shown yesterday, and I already said how we can perform this activity. Okay, then no need to select the namespace. Directly click on create. See this one just now we have created. This we can delete now because this one is not. You can delete by, see option will come here, delete. You can delete by clicking this one and select this. You have to enter the same name, click on OK. So this one is deleting. If you will check here, which namespace registration. Hmm. Sorry, wait ports. Okay, what happened? Okay, this one is deleted. Okay. Now, if you will sync this one, okay. See, right now, this one is connected with our GitHub repository. So what you have to do? Click on sync, click on prone, horse, then after replace, and click on synchronize, then click on OK. See, this will create your application. So whatever this one, this will live your application. Okay. If same thing I will perform on AWS, and there we means AWS giving free, there we can get easily public IP. Okay, so we can live the application. See, now application is ready, and if you will see in the backend now, that should show. See, now application is running our Log DevOps application. Now you can see scheduled, pulling, pulled, created, started. You can track everything. See, your application is running now. And if any issues will come, you can see this is, you can download the log and send to the developer. Okay. So many things are there. Okay. I will explain one by one. Okay. So first part is our deployment. Okay. Deployment through ArgoCD. Okay. That we did.
So here now you are able to see the application is running, started. Tomcat initialized with 9020. Okay. So now next what we need to do, now we have to deploy one more application, UI application, okay, that we need to integrate with this one. Okay, so before that one we have so many concepts in Kubernetes, so we will see those all concepts one by one. Okay, now tell me guys, whoever have doubt now. नहीं ऐसा नहीं है, करेक्ट से एक बार प्रैक्टिकल करना चाहिए। Yes, सेम प्रोसेस है। हाँ, सेम प्रोसेस है। GTL की जगह पर देखो वो भी रेपोजिटरी है, देखो ये रेपोजिटरी है, ये अपना पर्सनल रेपोजिटरी है, ठीक है। ये क्या है, ये पर्सनल रेपोजिटरी है, तो इसके लिए तुमको अपना सर्वर पे तुम्हें स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अपना स्पेस देने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम लोग को परसिस्टेंट वॉल्यूम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जब बताएंगे तो ये भी मैं बता दूंगा। देखो वहां पर भी हम लोगों ने जब देखा था इमेज को रखने के लिए हमने डॉकर हब बताया था, ठीक है, डॉकर हब बताया था ना। डॉकर हब पे हम लोग इमेज रखते थे, हाँ लाते थे, है ना। तो वो इस तरह से करते, तो सिमिलरली देखो डॉकर हब की जगह पर हम लोग यूज करते हैं अपना लिए ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल यूज के लिए ये हार्बर, इसके जगह पर एक हार्बर है, ठीक है। तो वो भी पर्सनल यूज के लिए होता है कि तुम एक अपना पर्सनल सर्वर क्रिएट कर लो, उसको जगह दे दो, क्योंकि वो डेटा सिक्योर रखना होता है ना। अब देखो मान लिया कि तुम्हारा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, अब तुम मान लीजिए इसको पे रख रहे हो, तुमको इस कंपनी पर क्या पता कि डॉकर हब जो है तुम्हारा डेटा ले ले, ठीक है। पॉलिसी वगैरह बहुत सारा चीज होता है, ठीक है, लेकिन कुछ कंट्री वाइज लेवल पे बहुत सारा चीज चलता है, ठीक है। तो जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है या मतलब कि बैंकिंग प्रोजेक्ट है, तो वो अपना सब कुछ रखता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे तो ये प्राइवेट रेपो बना करके अपना सिक्योर रखता है चीज, करेक्ट ऐसे। जैसे कि हम लोग अभी क्या है कि ये गिटिया जो है गिटहब की तरह ही है, बट गिटहब एक पब्लिकली एक्सेस होता है और गिटिया जो है प्राइवेटली एक्सेस होता है, करेक्ट। नहीं दो ये भी तो प्राइवेट बना सकते हो। हाँ, ऑप्शन जैसे पब्लिक और प्राइवेट का था हाँ, जो हम लोग क्रिएट कर रहे थे, तो हाँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बनाया, तो तुम इसको पब्लिक से प्राइवेट भी कर सकते हो। हाँ, बनाने टाइम सेटिंग में चेंज हो सकता है, करेक्ट। इसमें तुमको फिर पासवर्ड इसमें भी क्रिएट करोगे सब कुछ। तो कंपनी में गिटिया यूज कर होता है या फिर गिटहब ही यूज करते हैं ऐसे? नहीं दो जो गवर्नमेंट बेस है, जैसे मेरा कंपनी में ये गिट्टी यूज होता है, ये वाला, ओके, यही वाला, ओके। ये गिट्टी यूज होता है। हाँ। और मेरे कंपनी में हार्बर यूज होता है। बहुत सारा कंपनी जो है जो सिक्योर मतलब ये सब डेटा के रिलेटेड नहीं है, वो सब जो है सो यही सब यूज करता है, पेड वाला क्लाउड वाला यूज कर लेता है। हम्म। तो हम लोग को दोनों चीज समझना चाहिए, ठीक है। करेक्ट। तो आज एक चले हमको कोल्ड हो रहा है, तो मैं ज्यादा देर तो मैं और नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाँ। देखो यहाँ पे तुम जाओगे, ये आर्गो सीडी का है, ठीक है। तुम एक वेबसाइट में बताता हूँ, ये वाला पे तुम जाओ, ये सॉरी, ये देखो ये आर्गो ने अपने खुद दिया है, ठीक है, ये लिंक है।
यहाँ पर आर्गो सीडी ने खुद दिया है, ठीक है, कि तुम भाई इसको पे किस तरह से करोगे, तो उसके लिए बहुत सारा एप्लीकेशन दे दिया। देखो, अगर जो हेल्म टाइप तुम डिप्लॉय करना चाहते हो, ठीक है, तो ऐसा, तो अभी जो है ना हम लोग इस तरह से किए थे। देखो, गेस्ट बुक पे एक एप्लीकेशन दिया है, इसको ओपन ऑन कर रहे हैं। तो इसने भी क्या किया, देखो ये डिप्लॉयमेंट फाइल और सर्विस फाइल रखा, और तुम इसको भी डिप्लॉय कर सकते हो। नहीं तो मैं देखो इसी को करके दिखाता हूँ। इसको क्या करता हूँ, ये इसका, ये इसका है ना, मैं आ जाता हूँ अपने वाले पे। ये वाला है ना हम लोग का, सेटिंग में जाते हैं, इसका रिपोजिटरी को पहले ऐड कर लेते हैं। HTTP सपोज करो डिफॉल्ट में इसका हम लोग करते हैं। रिपोजिटरी ये है, यूजर नेम ये देने का जरूरत नहीं, इसको कनेक्ट कर लो। ठीक है, कहाँ गया, ये था ना, ये कनेक्ट हो गया। अब इसका एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं। नाम दे दो, यही नाम दे देते हैं। प्रोजेक्ट डिफॉल्ट में क्रिएट कर रहे हैं। ये URL है, और इसका ब्रांच क्या है वो देख लो, ब्रांच मास्टर है। तो यहाँ पर हटाओगे तो वो मास्टर देगा। देखो मास्टर दिया ना, मास्टर दे दो, पाथ अपने वो खुद दे देगा। तो हम लोग कौन वाला करना था, ये वाला ना, गेस्ट बुक वाला, क्या नाम है, खोले थे, ये वाला। ये रीड कैसे करेगा, तो यहाँ पर गेस्ट बुक, ये वाला कॉपी करके डालना पड़ेगा, क्योंकि इसी के अंदर ये रखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला, यहाँ पे ये शो कर रहा है, कस्टमाइजेशन गेस्ट बुक, देखें, कस्टमाइजेशन, वो इसको शो कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा है ना, इसलिए ये नहीं शो कर पा रहा, तो हम लोग ये वाला ही देखेंगे, ठीक है। तो गेस्ट बुक हम लोग रख देंगे। ओके, अब यहाँ पे क्लस्टर ये वाला डिफाइन कर लेते हैं, और इसको अब डिप्लाई कर देता हूँ। देखो हमारा एप्लीकेशन आ गया, ये यहाँ पे एरर आया है। नेम स्पेस मोड में नहीं ये करेगा, क्योंकि ये नेम स्पेस इसको में बनाया ही नहीं गया होगा। इसको में देखना पड़ेगा क्या क्या है। ओके, तो इसको में नेम स्पेस लिया ही नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग तरीका से डिप्लॉय होगा। ये डिप्लॉय में दोबारा ट्राई करता हूँ।
आ गया, ये वाला है ना? मास्टर था ना वहाँ। यहाँ पे दिखा रहा है क्या? गेस्ट बुक यहाँ पे दिखा रहा है? आज गेस्ट बुक कर रहा है। नहीं दिखा रहा है। और कोई इसका ब्रांड जो है बढ़िया से देखना पड़ेगा। नाश्ता के साथ तो रखा ही है। ये यहाँ पे शो करना चाहिए अर्गो सीडी एग्जाम्पल लैब से। ये देखो इसके अंदर बहुत सारा चीज है, ठीक है, तो ये नहीं हम लोग दे सकते हैं। और इसी के अंदर हमारा ये है, ये मास्टर के अंदर है। पूरा पाथ देता हूँ। पूरा देंगे तो हो सकता है। क्योंकि उसमें बहुत सारा एप्लीकेशन है। able to create a specification example of a invalid। अच्छा ये invalid बता रहा है। हाँ इसका यही कर दिया है क्या? लिखता हूँ ये करके। ये फिर भी error आ रहा है। नहीं तो एक काम कर सकते हैं, हम लोग इसको अपना पे ला लेते हैं, फिर देखते हैं करके। अच्छा और इसका ये है इसका। एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, देखता हूँ अपने से क्रिएट करके। ओके, तो हम लोग मान लिया जाए इसी के अंदर। ओके इसके अंदर तो एक है, एक और बना ही लेते हैं। अर्गो हो गई अगर अगली। अब यहाँ पे है सीधे डिप्लॉयमेंट के अंदर हम लोग डिप्लॉयमेंट और YAML रखते हैं, रख देंगे इसको। ये इसका नेम है। ओके
इंपोर्ट फाइल है ना इसका, ये इसका सर्विस डॉट वाई है मैंने। अगर यहाँ पे आ जाते हैं, तो डिलीट कर देते हैं। ये हम लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये हटा भी सकते हो यहाँ पर डिस्कनेक्ट करके, और यहाँ पर से ऐड कर दो। रिपोजिटरी हम लोग का क्या है, फिर अभी यहाँ से करता हूँ, और ये अर्गो नेम एप्लीकेशन का नाम डिफॉल्ट प्रोजेक्ट में, यहाँ पे हम लोग नेम देते हैं। ओके, ओके, फोल्डर हम लोग नाम रखे थे करेक्ट। ये वाला ये इसका जो बना हुआ है ना, वही इसका काइंड सर्विस, ये लगता है उसका गलत से ही अपलोड है। देखता हूँ प्रोन करके, स्पेस, ये कह रहा है इसके लिए है, ठीक है। दिया है तो होना चाहिए इसे। एक ट्राई और करता हूँ इसका, इसका वाला से ही आ गया। इससे तो रिलेशन है इसका, इसलिए इसको इसी से करता हूँ।
मैं चीज पर हेड रहने देता हूँ, जो रहेगा सिलेक्ट करेगा। वेस्ट बुक है ना इसका, इसका हेड से देखता हूँ करके। ये वाला है ना, ये भी दिखा रहा है। बात ऑटोमेटिक दिखा नहीं रहा, उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम? उसी में प्रॉब्लम है, इन लोग का काफी प्रोजेक्ट है, तो एक्चुअली पाथ का डिटेक्ट हो नहीं पा रहा है। डिफॉल्ट में हम लोग किए है ना, देखते हैं बैकएंड से क्या होता है। बाय डिफॉल्ट में किए हैं, कोई भी डिप्लॉयमेंट है नहीं। ये जो प्रोजेक्ट रखा है ना, उसी में इशू है, समझे। बहुत सारे उसके फाइल है, कहीं कुछ इशू होगा। अलग अलग फोल्डर्स में रखा है, अलग अलग फाइल। थोड़ा उसको देखना पड़ेगा। हम्म। देखना तुम लोग भी ट्राई करके। हम्म। वो लिंक व्हाट्सएप पे है क्या? हाँ, मैं भेज दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है। ये इसका चाहे तो मतलब कि नेम स्पेस ये जो है ना, वो चेंज वगैरह, फिल टू लोड लाइव स्टोरी राजा राज कैन नॉट बी मैनेज्ड इन नेम स्पेस मोड। बाय डिफॉल्ट क्लस्टर में ही करते हैं डिप्लॉय, ठीक है। देखता हूँ अपना बाय डिफॉल्ट वाला में।
डिप्लॉयमेंट ही मिसिंग दिखा रहा है। ओके, ये रीड नहीं पाथ को कर रहा है, समझे? ये पाथ को ही नहीं रीड कर पा रहा है। ये पाथ को रीड नहीं कर पा रहा है, इसको थोड़ा पाथ देखना पड़ा, ठीक है? चेक चेक करेंगे अपने एंड से भी। बड़ी भी पेन हो रहा है। चलो तो आज जो है ना बस इतना ही करते हैं, सही। फिर जो है मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीकेंड या और पहले भी मिलता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को आप क्या है कि अब फिर से हम लोग कुबरनेट के लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है? तुम लोग ट्राई करना कि ये सेटअप रेडी हो जाए तो बेटर है। क्या? रवि, ये जो कल का क्लास हुआ था थोड़ा संदीप को लिंक शेयर कर देना, ठीक है? हाँ हाँ, थोड़ा अपलोड कर लिए होगे तो उसको थोड़ा दे दो तो। हाँ, व्हाट्सएप पे जैसे भी आप उचित समझे वैसे शेयर करिएगा। वो थोड़ा उसको मिस हो गया था तो देख लेंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। मिलते हैं। ओके या ठीक है। थैंक यू। बाय।